So good afternoon, everybody. In English literature class, we are discussing Uncle Podger with some question answers. Question answer is a wonderful way to understand anything. If you can understand the question, you will understand the answers. You will know what is to be asked. But the main thing is you have to be speaking. And interactive sessions are very important because you can write very easily, but what about your spoken? Spoken में problem हो जाता तुम लोगों को. So the best part is learn any lesson and do the question and answer. Okay. You wanted the question answer. So summarizing Uncle Podger, who is a funny and a fussy character. The essay has been taken from a novel, Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome. A very humorous character, a very hilarious character. He loves to work, but he also loves to. He takes some responsibilities, but he is not skilled enough to perform it well. But one thing is very positive about Uncle Podger, that he is always volunteering to help. वो हमेशा help करना चाहते किसी न किसी तरह से किसी को. So I look at the summary, the character analysis of Uncle Podger, and then the question answers. You may stop me and ask me whenever you want to. Please keep your microphone muted. So, as discussed earlier, Aunt Podger wanted a picture to be hung in the dining hall. As usual, Uncle Podger volunteered, saying, I will do it. So he was one person who was always volunteering for any kind of work which was, whether it was a small work or a big, huge work, important work, unimportant work. He was always ready to volunteer. ऐसे पर्सन जो हमेशा वॉलंटियर करते हैं हर चीज के लिए, they are supposed to be very popular. At least they are showing interest in whatever is happening around them. One reason why people loved him, because he was one person who was always interested to know what is happening and how should things be done. And then when Aunt Podger wanted the picture to be hung in the dining hall, as usual, हमेशा की तरह वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि oh you leave that to me, don't you? और तुम मुझ पर छोड़ दो, वरी मत करो. Don't you, any of you, तुम वरी मत करो और ना ही कोई इस बात के लिए वरी करे, क्योंकि I'll do that. So this line shows how much interested Uncle Podger was in the household affairs. How he always was in a very positive frame of mind. And one thing more, how he always wanted to involve everybody in the family. He wanted to work in a group always. He wanted to involve everybody in the group, everybody in the family, and he used to give small bits of work to everybody. So the very line, oh, you leave that to me, don't you? Any of you worry of you. Don't you, any of you worry yourselves about that. I'll do that. One line which reveals his character. And then he took off his coat, read as took. He took off his coat and began. He sent the girl out for a 6-penny worth of nails. He sent his daughter to buy nails, कीलें खरीदने के लिए.
And then one of the boys after her to tell what size to get. Somebody was sent to buy nails. Another person was sent to tell the size of the nail. And from that to the whole house by storm. To the whole house by storm का मतलब होता है, this is an expression which means पूरे घर को उन्होंने सिर पे उठा लिया. Took the whole house by storm. पूरे घर को सिर पे उन्होंने उठा लिया. Please write down this expression. You will be needing this to talk about Uncle Podger. So when Uncle Podger wants to do something, he takes up the whole house by storm, involving each and every member of the house. तो हर किसी को इन्वॉल्व कर लेते थे वो. Nobody was left out. Even the maid, उनके यहाँ जो 4 वुमेन थी, जो मेड थी, उनको भी वो बुला लेते थे और बुला लिया था उन्होंने, और कुछ ना कुछ काम उसको भी दे दिया था. तो such was the character of Uncle Podger. Why can't people join on time? Okay. The wall was spoilt with numerous nail marks. अब पूरे का पूरा दीवार खराब हो गया था. With numerous means great deal of nail marks. बहुत सारे कीलों के निशान थे, दाग पड़ गए थे वॉल पे. It spoiled the whole wall. And in utter commotion, बहुत हल्ला हंगामा के बीच, बहुत शोर शराबा के बीच, बहुत कमोशन के बीच. कमोशन मैंने बताया था मतलब होता है लॉट ऑफ नॉइज, हल्ला गुल्ला. बहुत कमोशन के बीच उन्होंने फाइनली पिक्चर मिडनाइट को टांगा था. So finally the picture was hung amidst lot of commotion by midnight. The essay concludes with Aunt Podger remarking, और ऐसे कंक्लूड करता है जब Aunt Podger बहुत चिढ़ जाती है. She is so annoyed, she is so irritated by Uncle Podger that she says that next time when Uncle Podger takes up a military mission to do any work, she would go to her mother's house. कि वो चली जाएंगी बच्चों को लेकर के, बिकॉज वो कहती है बच्चों को भी उनकी इतना गाली गलौज सुनने का वो नहीं चाहती है कि वो इस तरह से कर्स करे बच्चों के सामने, उस तरह से बोली. वो एक झूठ मूठ का गुस्सा था. बट एवरीबॉडी यूज्ड टू लव. द बॉटम लाइन इज एवरीबॉडी यूज्ड टू लव Uncle Podger. Character analysis of Uncle Podger. Uncle Podger did not know how to do things in an organized way. काम तो उनको आता था, but he could not do anything in an organized way. अच्छे तरीके से काम करना उनको आता ही नहीं था. तो सबसे पहले वो क्या किया? फर्स्ट he dropped the picture. उन्होंने पहले क्या किया? किसी को बोला पिक्चर पकड़ाओ, और वो पिक्चर गिरा देते हैं. एंड इट्स फ्रेम came out. और उसका जो फ्रेम है, जब पिक्चर गिरा तो उसका फ्रेम निकल गया. And his hand was cut. उनका अंगूठा कट गया. Then he himself fell down the ladder. और उसके बाद फिर वो खुद से गिर गया. पहले पेंटिंग गिरी. And then he fell down himself down the ladder. And कहाँ पर गिरे वो? He fell down on the piano. और वो इतनी तेज आवाज होने लगी. Everybody was so irritated. Once he let go the hammer, it hit someone's toe. और जब वो उन्होंने हैमर उठाया, हथौड़ा उठाया कील ठोकने के लिए, तो उनके हाथ से छूट गया. कभी पेंटिंग छूटती है, कभी हैमर छूटता है, कभी कीलें गिर जाती हैं. What was happening? तो हैमर नीचे गिर गया और वो किसी छोटे बच्चे के अंगूठे पे गिर गया और वो इतनी जोर से चीखा. Thus one thing was happening after another. It clearly shows, please check the spelling clearly. It clearly shows
that Uncle Podger was incapable of doing anything that he did. तो इन सब बातों से पता चलता है कि he did not know how to work in a proper way, in a neat way. What is the meaning of neat? साफ सुथरा अच्छे तरीके से काम करना उनको नहीं आता है. Uncle Podger freely lets out his anger, और वो अगर कोई काम उनके मन के विपरीत हो जाता है, something which happens against his wishes, then he used to become very angry. फिर वो नाराज हो जाते हैं. Freely let out मतलब कि बार बार फिर वो गुस्सा हो जाता है. He is short tempered, मतलब नाक पे गुस्सा रहता है. और जब वो गिर गए नीचे, when he fell down the ladder, he started cursing. वो सबको फिर कर्स करने लगे, सबको भला बुरा कहने लगे. He blamed others without realizing that it was his own fault. गिरे तो खुद ही वो, और फिर वो बोले कि तुम लोगों ने चेयर ठीक से नहीं पकड़ा. तो किसी को बोले चेयर पकड़ो, किसी को बोले पैर पकड़ो, किसी को बोले मुझे पकड़ो. तो he was one person. Still, बावजूद इसके he fell down. And जब वो गिर गए तो he started blaming everybody else, क्योंकि उन्हीं का फॉल्ट था. और वो कहते हैं कि women जो होती हैं, औरतें जो होती हैं, they made a lot of fuss. वो बहुत नखरा करती हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम है, बहुत इश्यूज है. लेकिन एक्चुअली the reality was, क्या था reality? The reality was that he himself made fuss as he was a funny and a fussy character. These words are always describing him. Funny आप समझते हैं, fussy मतलब होता है कि जो किसी बात से खुश नहीं रहते थे. ये ऐसे क्यों, वो ऐसे क्यों, वैसे क्या हुआ, ऐसे क्यों हुआ. So he is a very fussy character. It is very difficult to please a person who is fussy. जो फसी कैरेक्टर होते हैं ना, तो बहुत मुश्किल से, they are fastidious, they are difficult to please. उनको अब खुश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. Uncle Podger had a high opinion about himself. Now, ये उनकी सोच थी. एक चीज कॉमन था कि everybody loved Uncle Podger. वो घर के बहुत स्वीट से एक ओल्ड से पर्सन थे, who was always trying to help. This was one reason why people loved him. And but Uncle Podger सोचते थे कि मैं, he had a very high opinion कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता हूँ, and जिस तरह से मैं काम कर सकता हूँ ऐसा कोई कर ही नहीं सकता. I am very skillful. He had a very high opinion कि मैं बहुत अच्छा हूँ. And at the end he uttered, और बाद में वो अटक करते हैं, वो बोलते हैं कि why some people have a man in to do a thing like that. क्यों किसी बाहर वाले, किसी टेक्नीशियन को, किसी मैकेनिक को बुलाना, क्यों किसी बाहर के किसी लेबरर को बुला करके ये काम कराना, जबकि मैं खुद यहाँ पर हूँ, आई एम देयर. तो बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत क्या है, जरूरत ही नहीं. अंकल पॉजर इज एक्सेंट्रिक. दिस वर्ड एक्सेंट्रिक का मतलब बताइए. मैंने बताया आपको व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेंट्रिक. एक्सेंट्रिक, अगर आप लिखेंगे नहीं नोट तो यू विल फॉरगेट. यस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेंट्रिक. क्या मतलब एक्सेंट्रिक का है. जब अंकल पॉजर पढ़ रहे हैं, ये वर्ड सब नहीं आ रहे समझ में, तो क्या समझेंगे आप. I see two people with their cameras on. Unusual, ma'am. Unusual. Unusual. अजीब, weird, थोड़े से सनकी टाइप. ठीक है. Sunky या eccentric या unusual, weird, strange. He attaches great importance to trivial jobs. What is the meaning of trivial? मैम छोटा जॉब मैम. हाँ, सारे वर्ड मैंने बता रखे हुए हैं आपको. I have explained all these words with you. Trivial means small jobs. तो छोटे से छोटे जॉब को भी he attaches great importance to trivial jobs. So he has to hang a picture on the wall, yet he begins to do the petty job. Petty का मतलब क्या होता है. Yes, what is the meaning of petty?
Same as trivial. Small job. Small, unimportant. Unimportant job. तो इतना छोटा काम अनइम्पोर्टेंट जॉब को भी उन्होंने क्या दिया, उन्होंने as if it were a big military operation. He engages all the members of his family. Uncle Paul provokes laughter, मतलब हंसी उनके बारे में सोचते हो तो हंसी आती है. Provokes laughter. We cannot help laughing at his fussiness. और उनके fussiness पे हम लोग खुद हंसते हैं. और उनकी self pride पे वो कितने वो खुश हो जाते हैं कि मैं सारा काम कर सकता हूँ. But still we cannot help loving him. But still all of us love him. Before I ask you any question, are there any questions in your mind? Please ask me. मैम फर्स्ट और फसी में अंतर मतलब क्या हुआ मैम? FUSS और Do not FUSS. make a fuss. अच्छा एक हम लिखते हैं सेंटेंस लिख के समझ लो. Do not make a fuss. मतलब ज़्यादा नखरा मत करो. This fuss is a noun, ठीक है? And fussiness. Fussy means adjective. ठीक है? Fuss जो हो गया वो which is the noun. And fuss is an adjective. Do not make a fuss. Noun हो गया. And fussy is an adjective. He is a fussy character. Understood? Yes मैम. And fussiness be noun. Fuss and fussiness. His honesty. His fussiness. Now let us start. मैम अगर इसमें एक क्वेश्चन आ गया मैम कि आप इस लेसन से आप क्या सीखे, तो इसमें क्या हम लिखेंगे कि मतलब कोई भी काम हो जो बाहर वाले से हो तो उन्हीं से कराना चाहिए, या ऐसे जस्ट लाइक अंकल पॉर्जर बन जाना चाहिए? अच्छा तुम क्या क्वेश्चन बोल रहे हो? इस लेसन से आपने क्या सीखा? यस मैम. हाँ बताइए. What have you learned from this lesson? वो आपसे पूछ रहा है मैम. मैम हम पूछ रहे हैं मैम, हमको कंफ्यूजन मैम इसमें क्या लिखेंगे कि जैसे कोई जॉब छोटा है वो बाहर वाले से कराना तो उनसे करा ले, ये लिखना है या इसमें लिखना है कि कोई समझ में नहीं क्या लिखेंगे इसमें वर्ड्स? वो आप समझिए ना. लिटरेचर आपको लिटरेचर आपको स्कोप देता है, अलाउ करता है अपने थॉट्स को, अपने वर्ड्स को सामने लाने के लिए. ठीक है? डिफरेंट पर्सन्स कैन राइट डिफरेंट थिंग्स. चलिए आप हमको बताइए. आप हाँ तो आप बताइए ना. बात आप इसमें क्या समझ में आ रहा है आपको कि कोई भी एक काम चीज करने है के जो कि कोई भी काम करने इम्पेशंस के नहीं होना पहले चाहिए उसको था. अच्छी तरह से जान लीजिए. ठीक है? आप पढ़ चुके हैं लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग. यस मैम. है कि नहीं? तो लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? यू ऑलरेडी नो द आंसर. कि किसी भी काम करने के पहले, टेकअप करने के पहले यू मस्ट नो हाउ टू डू इट एंड यू शुड बी कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग दिस. तो अंकल फौजा कॉन्फिडेंट थे नहीं, तो उन्होंने सबको बुला लिया. हाँ वो इम्पेशेंट होना चाहिए. आप लोग ये भी सीखते हैं कि गुस्सा और बहुत बुरी बला है और किसी भी तरह के एंगर को सामने नहीं आना चाहिए.
फर्स्ट ईयर का लिटरेचर पढ़ लिया उसके पास सारे आंसर उसी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड ईयर में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो राजवाड़ा बताइए कि व्हाट है, क्या क्या लेसन आपको सिखाता है ये? मैम, in this chapter learn about In this chapter, in this essay, I have learned that my takeaway is that. Is there one? Hello? yes ma'am. Yeah, please speak. मैम, इस चैप्टर से ये पता चलता है कि हमें कोई भी काम के लिए थोड़ा पेशेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि हाँ ये हम काम अकेले कर सकते हैं। ये नहीं कि इस काम को हम टाल दे, दूसरे को ऊपर बोले कि हाँ तुम भी आ जाओ इस काम करने के लिए। काम को पहले देखना चाहिए कि हाँ ये अगर हमसे हो जाता है तो हम ही इसको कर लें, क्यों और लोग को इसमें इन्वॉल्व करें। और इसमें और ये इस लेसन से और ये पता चल रहा है कि हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए और हम अपने अंदर के ईगो को हटाना चाहिए। ये नहीं कि ये काम हम ही अच्छा कर सकते हैं, कोई और भी हो सकता है जो इसको और अच्छा भी कर सकता है, इसलिए अपने अंदर। ठीक है, तो जो आप हिंदी में बोल रहे हो उसको आप इंग्लिश में बोलिएगा। Why? Because little knowledge is a dangerous thing. हाँ, तो एक और हमको एडजेक्टिव इसमें याद आ रहा है। चलिए तो all of you write down your answers अपने अनुसार। Okay, whatever you're speaking in Hindi, Raj Verma, please try to speak in English. ओके मैम। ठीक है। Now, what kind of a person was Uncle Fauja? Yes, ma'am. Can I What kind give of the a person? Yeah. Can I give the answer of this question, ma'am? Anybody can give the answer. Okay, okay. Uncle Pojar was a funny and a fuzzy person. He did not want to do any work in an organized way. Okay, the next question. What happens when he decides to hang a picture? Yes. Yeah. Okay. Now please continue. What happens when he decides to hang a picture? When he decides to hang a picture, everything goes topsy-turvy. Nothing works out straight, and he involves all the people in the family, and there were a lot of problems. Sometimes when he started, he dropped the picture, then he dropped the hammer, then he dropped the nails. A lot of things were happening when he decides to hang a picture, and he took the whole house by storm, and nothing worked out right until finally at midnight he hung the picture, and that was, and a lot of things happened, like the wall was all spoiled. Guys, please speak. अभी मैंने आपको समझाया था ना कि क्या पढ़ना है। Please answer the question.
No. Question number 2. Answer कीजिए. Roll number 2. What happens when he decides to hang a picture? बताइए ना क्या हुआ था जब वो पिक्चर हैंग करने जा रहे थे. जब वो पिक्चर हैंग करने चले तो क्या हुआ? When he wants to hang the picture, he spoiled the entire wall, and the picture is hung crooked. Crooked. वो सब डाल दीजिएगा कि the painting fell off, the hammer fell off, the nails fell off, there were a lot of problems. Then he fell down from the ladder. So a lot of things happened when he started to hang the picture. Now the next question. Sketch the character of Uncle Podger. Crooked. Number 4. This is the character. Somebody please read this. Sketch the character. पढ़िए इसको. Read. Yes, ma'am. Uncle Poser did not know how to do things in an organized way. First, he dropped the picture and its frame came out. His hand was cut. Then he himself fell down the ladder. Once he let go to the hammer, it hit someone's too. Thus, one thing was happening after another. It clearly shows that Uncle Poser was incapable of doing anything in a neat way. Uncle Poser freely let neat way मतलब बताए अच्छे तरीके से. Yes, ma'am. Uncle Poser freely let out his anger when he fell down the ladder, cursing and abusing everyone. Cursing का मतलब होता है गाली देना. किस curse hello cursing. Cursing means abuse करना ma'am. Cursing. He blamed others without realizing that it was his own fault. He said that women made fuss. The reality was that he himself made fuss as he was a funny and fuzzy character or fuzzy. Ma'am, how we pronounce cursing. Fussy, bro, fussy. Uncle Poser had a high opinion about himself. At the end, he uttered why some people have a man to do a little thing like that. Uncle Poser is eccentric. He attaches great importance to a trivial job. He has to hang a picture on the wall, yet he begins to do the petty job as if it were a big military operation. He hangs all the members of his family. Uncle Poser provokes slaughter. We cannot help laughing at his cuteness and self-pride, but still we cannot help loving him. Eccentric. Loving him. हाँ कौन सा प्रोनाउंसिएशन वर्ड बोल रहे थे? Which word? Ma'am, FUSSY. 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 Okay, ma'am.
Now we're coming to the sixth question. Do you know anyone who resembles Uncle Potter? Hmm? No one. नो मैम। Ma'am, resemble means what, ma'am? Resemble का मतलब होता है जो अंकल पॉटर से मिलता जुलता है। I think Harris, ma'am. Harry who? Bro, in your life, do you have any person? Do you know any person, anyone who resembles Uncle Potter? नो मैम। कोई तो जानता होगा। हम तो बहुत लोगों को जानते हैं जो रिजेंबल Uncle Potter। मैम हम अपने अकॉर्डिंग बोल सकते हैं ना किसी का, मतलब जिसको हम जान रहे हैं कि हाँ उसका बिहेवियर जस्ट लाइक अंकल पोजर। यस, हाँ तो वही कर रहे हैं, शक्ल में थोड़ी पूछ रहे हैं। जिनका Yes. बिहेवियर है, जिनका Yes, जिनका मैनरिज्म उसी तरह का है, जो उन्हीं की तरह से उनकी कैरेक्टर भी वैसे ही है। Yes, ma'am. So this was the essay Uncle Potter. Do you know anybody who resembles? हाँ बोल सकते हैं। लिटरेचर में तो आपको अलाउ कर देते हैं ना कि टॉक अबाउट एनी अदर पर्सन हु रिजेंबल्स अंकल पॉटर। आप बता सकते हैं किसके, यू कैन अपनी तरह से बोल सकते हैं आप बोलिए तो लेट्स सी क्या उनके बिहेवियर सिमिलर है, क्या उनकी एक्टिविटीज भी सिमिलर है, आर द बिहेवियर एक्टिविटीज आर द सेम। हेलो, Yes, ma'am. बोलो तो लाइन तो पहले अपना। Yes, ma'am. There is one person in my village whose name is Mr. Rana Pratap Singh, whose behavior is just like Mr. Uncle Pojar, ma'am. Because he what are the activities that he does? yeah, because he always want to do any work individually. They don't want to do any work in an organized way. Okay. So you can say you can describe the person as funny, fussy. Okay. आप ये पिक्चर देख रहे हैं, this picture in front of you. Can you describe the picture? What is happening in picture number 2? Not this. What is happening in picture number 2? मैम अंकल पॉजर फोटो को उसको किल को कर रहे हैं और यहाँ पे सारे लोग उनको होल्ड करके रखे हैं। कोई कुर्सी, कोई उनको पकड़े, पैर पकड़े हुए, कोई उनका कमर पकड़े हुए, उनको होल्ड करके रखे हुए ताकि वो गिरे ना। अच्छा, और उनका ये फाइनल जो है द लास्ट, मतलब ही वाज वेरी हैप्पी कि अपना काम वो कर चुके हैं। तो द फर्स्ट पिक्चर tells a lot of stories, tells the whole story about Uncle Potter. What is happening in picture number 1? And this is Mrs. Potter, जो कि बिल्कुल हाँ
नंबर 2 पूछ रहे हैं, नंबर 1 बोल रहे हैं, दिस पिक्चर नंबर 1. ये रहने दो, तुम बाद में करना। आओ चलो हम लोग रूम में चलते हैं। ये लोग खेलना दे, बड़ा लोग है, हम लोग वहाँ सब बैठेंगे। चलो should not select you. देखिए पिकाचू भैया निखिल सिन्हा, पिकाचू निखिल सिन्हा, गलत निखिल भाई बोल निखिल म्यूट भाई कर लो। म्यूट कर। I have told you so many times to keep yourself muted. Now, I hope you have understood the story. Now, the next story, sorry, not the story, the essay of studies for a serious essay है. Uncle project was very funny, hilarious था. तो first essay जो आप जाने हैं, the definition of a gentleman. The second is Uncle Pojo, and the third is of studies, पढ़ाई के बारे में. And this is a very beautiful essay written by Francis Bacon. We are going to take up this in the next class. What are the advantages of studies? Why do we study? What are the effects of studying too much? So he has worked on a lot of things, and he has researched also. He has researched on a lot of things. So Francis Bacon was famous for wit and insight. It means he was famous for his humorous style of writing. He was famous for his wit, for his wisdom, for his in-depth knowledge. And he was one of the greatest thinkers of his time. Was born in London to parents who were members of the court of Queen Elizabeth I. He attended Trinity College, entered the practice of law in his late teens, and became a member of the House of Commons at the age of 23. A philosopher, scientist by nature, and one of the most admired thinkers of his day. Bacon was a founder of the modern empirical tradition based on closely observing the physical world, conducting controlled experiments, and interpreting the results rationally to discover the workings of the universe. It means his essays were based on a lot of research. One of his many published works, he is best remembered for his essays, for their wit and insight. His essays had everlasting effect on the collection. आप पढ़ेंगे तो it will leave an impression in your mind, on your mind. So can somebody answer the question? What is the importance of studies? ऐसे पढ़ने के पहले आप बताइए, what is the importance of studies? उनके essays पर आप पढ़ने के बाद आपके मन पर एक छाप छूट जाएगा. It is such an interesting essay. और उनका कोई भी वर्क था,
होता था, वो बहुत रिसर्च करके और इंस्ट्रक्टिव होते एसेज, दे इंस्ट्रक्ट, दे विल टेल यू समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट, व्हिच आई थिंक वी शुड नो। हाँ बताइए, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज? प्रॉब्लम 45 बताइए अमीशा। बताइए अमीशा। I have unmuted Amisha. Please tell me what is the important studies. You are the student of second year. Please tell me what is the importance of studies. Yeah. बताइए। Ma'am, the importance of study is that it increases the confidence, self-esteem, Yes. and improve the ability to learn and to retain the knowledge. Yes. It improves self-esteem. Yes. Roll number 4. 445. BCA roll number 4. Rohit Kumar. Why don't you keep your cameras on first of all? No, Rohit, 1 minute. Why don't you keep the camera on? Camera on करो पहले। I have unmuted you. Hello. Yes, ma'am. Yeah. Camera on करो पहले। Okay, ma'am. Yeah, the importance of studies. The main thing that importance in our life of study that we have the ability to think about deeply. We learn, first of all, we learn too many variant of societies and the ability to think to solve a problem in easily manner, and we have to when we got the knowledge, then we can develop our personality and the life and the professional and personal life, and we can develop our nation, and we can develop many things after studies. The the main thing of studies that we got the privilege to summarize anything in कुछ बोल रहे हैं बोल रहे हैं। All right. ओके मैम, थैंक यू मैम। Swati Gupta. What is the importance of studies? Good afternoon, ma'am. Good The afternoon. most important part of our life is change the whole process of our life and give you a new thing to think about different. And when we go to the study in other side of our cities or country, that time we see the different students study lifestyles and behaviors, lots of things be captured, and study give me a lots of
thing to learn about it. Thank you, ma'am. In your next class, read the essay of studies, the content which I've shared with you, and come back. Then we will discuss what are the importance, what are the advantages, and which subjects helps us in what way. Who should study mathematics? Who should study law? Who should study communication? So please read that essay and come in the next class so that we can discuss in the class. And be ready to answer questions. If you want to make this an interactive class, a simple question like that, everybody should answer. Yes, Mohit Anand. Mohit Anand. Mohit Anand has gone up. वो कहते हैं, पहला लाइन जो कहते हैं, स्टडीज सर्व एज डिलाइट, मतलब स्टडीज से हम लोग को खुशी मिलती है. We feel happy when we learn something new. So it gives us, the first thing is that study always gives us delight. And we'll continue with this in the next class. Mohit Anand got off, I don't know where. The moment I unmuted him, he went off. That's it for today. Learn the lesson of studies, read it.